हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरजेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन विद एग्जांपल्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। सो जब हम कभी सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं उस समय इंटरजेक्शन का यूज होता है। इट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो मोस्टली जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं वर्ड के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, यानी वर्ड के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। सो ये है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। These interjections are used when one greets the other. यहाँ पे greeting का मतलब होता है किसी को, जैसे हम लोग जब मिलते हैं नमस्ते बोल के हम लोग उनको ग्रीट करते हैं या कहते हैं कि हाय कैसे हो आप, हेलो। सो नमस्ते बोलना, हेलो हाय बोलना, उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स: हाय, हेलो, हे, व्हाट्स अप, हेलो, हाउ आर यू। से यहाँ पे इंटरेक्शन है हेलो। हे, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे इंटरेक्शन है हे। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। These interjections are used to express emotion of happiness. यहाँ पे जॉय का मतलब है खुशी। सो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय अचानक खुशी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स: हुर्रे, ये, वाओ, गुड, वाओ, द सॉन्ग इज सो मेलोडियस। यहाँ पे इंटरेक्शन है वाओ। हुर्रे, वी वॉन द मैच। यहाँ पे इंटरेक्शन है हुर्रे। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। These interjections are used to get someone's attention towards us. So यहाँ पे attention जो है इसका मतलब है ध्यान देना। So interjection of attention किसी का ध्यान अपने तरफ करने के लिए यूज किया जाता है। Examples: shh, listen, look, hush, look, the doctor is coming. Interjection है look. Shh, don't make noise. यहाँ पे इंटरजेक्शन है shh. Interjection of approval. These interjections are used to express approval or acceptance. So approval का मतलब क्या है? स्वीकार करना, स्वीकृति देना, मंजूरी देना, एक्सेप्ट करना। Examples: well done, brilliant, bravo, yummy, yummy, I loved your cooking. यहाँ पे इंटरजेक्शन है yummy. Well done, you have got the highest mark. यहाँ पे इंटरजेक्शन है well done. Interjection of surprise. These interjections are used to express the feeling of surprise. अब यहाँ पे सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, ताज्जुब होना। एग्जाम्पल्स: ओ, व्हाट, हाँ, व्हाट, अजीत इज नॉट कमिंग। यहाँ पे इंटरेक्शन है व्हाट। ओ, व्हाट विल हैपन नाउ। यहाँ पे इंटरेक्शन है ओ। इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। These interjections are used to express strong emotion of sorrow. So यहाँ पे sorrow का मतलब होता है दुख, गम। So interjection of sorrow यहाँ पे दुख को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। Examples: ouch, oh, oops, alas, ouch, I have fallen down. यहाँ पे इंटरेक्शन है ouch.
oops, sorry, it was my fault. यहाँ पे इंटरजेक्शन है oops. सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा इंटरजेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन विद एग्जांपल्स. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आने से प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा. अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.